पीछे आप बैठ कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, पीछे आप व्हाइट दीवार रख सकते हैं, है ना, और ऐसा कुछ मतलब नहीं है। और सर अभी जैसे दिख रहा, मतलब अभी जैसे मेरा जितना दूर है उतना दूर से ठीक है ना, या और जितना थोड़ा दूर देखिए, दूर? मेरा कितना दूर देखिए, पीछे मेरा पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है। आप ऐसे मत रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे करिएगा कि ये जैसे दे रहे हैं ये वाले, इसके पीछे आप बैठ जाइए, जैसे आप बैठे हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो सही रहेगा, इश्यू नहीं है, ठीक है। और थोड़ा क्या? हाँ, बाल बाल कटा लीजिएगा, दाढ़ी वाड़ी बना लीजिएगा, हाँ वो तो सर, वो कुछ अलग और चीज हो गया। ये सब चीजें, और करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत कर लीजिए, करंट अफेयर्स बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करें सर फिर। इतना कुछ हो रहा है देश के अंदर अब, मैं कल उस दिन के बाद देखना शुरू किया, इतना कुछ हो रहा है, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ मतलब न्यूज निकल ही रहा है, हर मिनट मिनट में कुछ न्यूज निकल रहा है, नहीं तो आपको मार्केट नेगेटिव रिलेटेड, न्यूज परिवार देखनी नहीं है रिलेटेड, ना, सब कुछ। आप देखना है तो आप पॉजिटिव न्यूज देखिए, जैसे आप डीआरडीओ में अभी जो हुआ, इसरो ने एक नई चीज निकाली है, नासा ने, ये सब चीजें देखिए, इससे मतलब नहीं आपका फार्म बिल्स क्या है, मतलब जो वायलेंस हुआ उस पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अब पूछेगा भी तो आपसे ये नहीं पूछे, आपसे आपकी राय जानेगा बस, उधर तो आपसे आपकी पॉलिटिकल कुछ बोलना नहीं है। आपसे आपकी राय जानेगा बस। अच्छा। सो शुरुआत करते हैं, चलिए। अच्छा, मैं आपका जी रिज्यूमे सर। पढ़ रहा था अभी, तो उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, शुरुआत करें फिर। सर रिज्यूमे कुछ ऐड करना है क्या कुछ रिज्यूमे में? नहीं, कोई इशू नहीं है, नहीं, वो जितना ऐड करेंगे उतना आपसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फर्स्ट रोहित, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। yes sir, my name is Rohit Hazare. I'm 22 years old and I'm from Hooghly, West Bengal. uh, my father was in army, so I had to go with him whenever he had a posting. So most of my schooling was done in army public schools, and I had my secondary senior secondary schooling from army public school Barakpur. And after that my father thought that I should be in a boarding school, so he sent me to Andhra Pradesh. There I completed my higher secondary from Boon School, Kakinada. Then I came back to West Bengal and pursued my BSc Microbiology from Adamas University, Barasat. Okay, great. So, what's your strength? Give me Sir, any 5 strength of yours. okay. First thing is I'm trilingual. I can speak in Hindi, Bengali, and English as well. And apart from that, I'm uh, I'm very keen to learn new things, as well as I am a quick learner. And I have, as I am a fresher, so I don't have any work experience. But apart from that, I have leadership skills, and I have um, used it in my football as well. I've captained my football team, and apart from that, I know a few basics about Microsoft Office and internet as well. I'm up to date as well with the new technologies. Okay. What's Philomath? If I'm pronouncing right, Philomath. So Philomath is someone who is very keen to learn and who loves to have new knowledge about everything. Okay. So you are disciplined as well as team player, right? Yes, sir. So how you are disciplined? So as I already told you, my father was in army, so Your father was it's in army, no? So what's that's affect you? I know that the yeah. army kids are very disciplined by nature, by everything, by genetically they are very disciplined. But what's the fact that how you are disciplined? Or he always treated me like that, means he always told me and means made me learn things and made me learn the importance of discipline. So he always tried to keep my routine as disciplined as well. So from that part I would say that I learned something from my father. And apart from that, there is something in me as well, that I need to be disciplined so that I can manage my works,
so that I can fit my as I said that I am a philomath, so I love to learn new things, and I can't wait for 2 to 3 days to learn means 2 to 3 skills. So I try to start everything means 2 to 3 skills in right now from first day. So I need to make a proper routine about that. That Recently, this time what I you will have learned? focus. Recently, the latest what you have learned from the internet or books? Uh, So right now I am doing a course from Skillbus about business communication, and also I'm trying to learn French language from the Duolingo. Mhm. And apart from that, from a close friend of mine, he's pursuing computer engineering. So from him, I'm trying to learn C++, and after I learn C++, I will move on to Python as well. Okay, so you okay. On which rank your father was? My father was when he retired, he was a JCO. Yes, you're junior commissioned officer, right? So my question is, Rohit, that mostly army kids we have seen that they joined army or defense forces. Even you have a very good opportunity to join defense forces. At a very young age of 17 or 18 years, you will qualify for NDA, and then you can earn money. So what's the reason that you have not joined defense services as your father? Um, for Because that part, I sir, know I would that there is a lot of opportunity and for the army kids. Everything favors you. You are disciplined. You are a team player. You have a leadership quality, as you told. You are keen to know new things. So why you haven't joined army? as per me, I would say that joining an army is a very prestigious thing. But uh, what my dream is about something else. My dream is about um, having my own company, having my own startup that I can grow into a global corporation one day. So that is why that I never had that in mind that I would join an army force. You're going for MBA. So I think that after joining army or defense, and after 7 or 8 years, you will go to your college to do MBA after taking a leave of student leave, which we call it. I don't know about much. So you can take that leave and go for MBA. This will be, the government will incur all the expenses. You will go to college after if you after in the government the service. So I think doing MBA it is little problem for you because your father have to submit the fees. Everything have to be done by your pocket. But if you go to defense, you surely will go do MBA by government expenses. So do you don't think that you will make extra expenditure on your father? Okay, for that part, sir, I'll take the reference of my first statement that as my dream, it is very important for me to get used to the corporations and the MNCs as well. So spending 8 years in army I would say that that would be the waste of the time for me gaining the knowledge. But uh, apart from that, it's as I said, it's a prestigious job. My means what I will say that it can be some kind of emotional attachment also I can get. So I wouldn't take that kind of risk. Okay. In your family, anybody have in army in your generation? No, sir, I'm the only child of my parents, and apart Any from cousin that, or sister or brother? Nobody. no, sir. Most in my father's generation also, no one was in army, and not in my cousins as well. Okay. Only my father. Okay. No, great, great. That's completely your decision. But I have just asked a question. So, do you know who is the founder of OYO Rooms Yes, sir. Ritesh Agarwal. and who is the founder of Starbucks? Actually, it was founded by three persons. One is Mr. Jeff Segal, and apart from that, I forgot the two names. Actually, I knew that, but I forgot the two other names. They all three of them were friends, and they just planned to open Starbucks in mid 1970s.
Yeah. So can you explain the business model of Starbucks? I think it is a restaurant, right? Uh, Actually, it's more like an cafe, and it started with only with coffee business. So um, when the three friends opened that, so at that time they only had the aim of making it, providing the customers with the best coffee they can imagine. So, and apart from that, they also had some aims of selling spices, and they wanted to make coffee available in good quality coffee available in marts as well. So that was their prime aim. But their former CEO came into business, Mr. Howard. So he took it to an international level, and as we know now, there are more than 3,000 branches of them all over the world. Have you ever visited IFT? Uh, Actually, I haven't visited IFT, but I have uh, done a done a course, online course done by IFT, organized by IFT. And what was that course with? It was business planning and ideas. So what you have learned about from that course? Actually, it was organized during COVID times. So they were telling me about the startups and what will happen to the already established companies because of this COVID situation. And apart from that, how can we manage the situations in those already established companies so that they won't have that kind of loss that uh, they can't, that the company may suffer for a very long time. So they also asked few of us about the techniques that we will approach with if uh, if we work in a company. And actually I was asked about it as well, that if I work in a company and if the company is going for a downfall, so what can be your advice about that thing. And so I answered that with that I will first see that if it is enriched with technological enrichments. And uh, my first step will be to see that if it is technologically enriched, so that it is available for customer to online basis as well, because as we know in COVID times, they are having a security issues as well, that they might catch the virus if they go to market and that thing. So, and apart from that, work from home is also an issue, so I mentioned that part. There is a time of COVID. So what do you think that what the business ideas we can emerge from this COVID? What are the businesses that emerge in this COVID, that boom in the COVID, in this COVID? Okay, business ideas, I would say that first thing is technologically advanced businesses that can be available for customers from if they can order it from the phone, that will be the best part. And uh, also delivering it right at their home, something like that. And I think pharma industries are growing in these times by a lot. And apart from that, I think e-commerce field is also growing, so that can be a good thing to start something or do in a business. If a person will deliver food to you, so you will get a chance to get interact with him. So you will get might be you or somebody else get contact with COVID. How this will be the idea? uh, they will be the employees must be tested regularly for any symptoms or like that. And no touch delivery should be also added to the service, so that it will be fine. It will be fine, I guess, if no contact delivery is performed. But my question is that if a person brings some parcel for you, so surely he will hand to you. He will hand over to you. So there will be a contact with you and you and him, because you have to take the parcel. He does that parcel. You have also taken that parcel. So there is not a contact. This is not a contact basis. I think.
No, in no contact delivery, if the customer want, we can give the no contact delivery as well. We will, if the person is staying in a flat, I'll take an example of a flat. So uh, the delivery boy will just leave it in front of their door or something, if there is something like where we can keep that, and we will keep it there, and we will just give it a call to customer that we already kept it there, you can take it from there. What about sanitization business? Because it's boomed uh, so high. Sanitizers, yeah, actually, sanitization business was a good idea a few months ago, but I think already a lot of people already entered that field. So and apart from that, many pharma industries also made their production very high. So I would say that, and apart from that, COVID is already on the means, already vaccines are there, so it's already on the verge of end. So I would say that it might be a risky business as well okay. for now. So I'm going through your CV. You have 1 minute. So you have written there in your goals that be one of the social activists concerning with hunger and poverty issues of the society. What do you Yes, mean sir. by this? So actually, I want to be a social activist in sense that I want to help them with organization that I can make about uh, acting with the with providing food and acting with jobs as well. If we can, I think that poverty is one of the reasons of poverty is that most of it is unemployment. So I think that if we can do something about the unemployment, it will uh, it will make an effect on for poverty. And for the hunger part, I would say that if we can manage the food waste, it will give a means opportunity for other peoples to eat as well who doesn't get food. So, but this is the work of government. So how you will do? You can only said to government, or you can protest about government. But how you will feed lakhs of crores of people? So So that part, sir, it has to be after my first goal. First I need to first I need to have money for that. Obviously, without economy, doing a social work in a large scale is a very difficult thing. So first I need money, and then I will plan about that part. तो पहले अपना पेट भरेगा देन दूसरे का चेक करेंगे, राइट? ऐसा कुछ? And no, sir, not like that. But means obviously, sir, without money, how can I do that? Uh, Yeah. there I can तो protest it, हम्म, but protesting, I don't think that protesting always leads to something good. So I need to work on it work on it myself. so from the word protest, I have got farmers protest in Delhi. May I know on which place it is that farmers protest going on? It is going on in New Delhi. New Delhi. On which border? On which border? Okay, There is sir. specific place there that is going. Not everybody in everywhere in Delhi. So on which is that farmer protest is going? What do you? I don't know it, sir. No, sir, I don't know it. Okay, fine, no issues. So you should read about that. Okay. So yesterday on 26th of January, they have done a lot of wrong things. They climb in the Red Fort of our country. You know, India is a secular country, so they hosted a flag of one religion in a Red Fort, from where our Prime Minister, do that all these things. What do you think? Is it right or wrong? No, it is also. Is it a good way to protest? Definitely not a good way to protest. And
uh, it's not. I would say that protesting is in its own place. You should always protest for your rights, but doing it means doing it like this by uh, breaking the laws is a very bad impression on us from a global aspect as well. So I would say that it's a very bad approach by the farmer organization who did this, and because of this, two farmer groups already left it. Okay. I visited. I have one question that you have participated in 30 hours recombinant DNA technology course. What's Yes, sir. that? So it's a, I would say that it's a very modern technology about in the field of microbiology and biotechnology. From this, we can perform the cloning aspects. It's in form of um, what I'll say. If I need to make you understand, I would take an example for this. Uh, as you might have seen movies like X-Men No, I and haven't seen. okay, any movie. Okay, we can add in future terms. I can say that we can add superpowers and we can add aspects to any human or any living organism from this technology. In this, we uh, modify a DNA or any cell so that they can perform what's not usual, I would say. Okay, so you want to do something, hypothetical, which is, everyone has three legs, four hands, two, mouth, like this something. It is completely In hypothetical, and what's the need of that? Sir, it's definitely not hypothetical anymore. Huh. IDT has already taken place in many fields, sir. Sir, actually, I I don't remember any example right now, but it has been used in many fields already. IDT technology. Okay. And what's that DNA? What is the full form of DNA? Um, ribonuclease. Yeah. Okay. So you have done BSc in microbiology, okay? Yes, sir. What's your project there? Sir, basically, uh, even the COVID vaccines are part of the part of the works are done by microbiologists only. Hmm. Uh, we we actually see the identification of the virus or the bacteria that infects that causes a disease. It's also identified by microbiologists, and apart from that, we, as I said, that RDT, through RDT and many other techniques, we try to counterattack the virus or bacteria involved in that disease. Okay. So you have take the name of COVID. So can you name any COVID vaccine? So can you name any COVID vaccine? Yeah, Covishield or Covishield, Covaxin. Covaxin, Covishield. I think they both are same. What do you say? No, Covishield is, I think, Covishield is made by AstraZeneca and Serum Institute of India, and Covaxin is made by Bharat Biotech Hmm. uh, with the help of any one more organization. It's international organization. That's Oxford. Um, I think AstraZeneca is for Oxford. AstraZeneca Bharat is from Biotech, they Oxford. are, yeah, That's Bharat Biotech is made from AstraZeneca and Oxford, and the Serum Institute of Hyderabad. yeah. Okay, no issues with that thing. So you have got 7 CGPA in SSC. SSC is 10th, right? Yeah, it's secondary school Secondary. So certificate. actually we have 10th and 12th, Yeah, I right? know. So 10th you got 7 CGPA, right? Yeah, And in 12th you got 302 out of 500. So probably 60% marks.
What's the problem? Matlab, you can score well. Why you haven't scored well? You're satisfied with your marks? I am not satisfied at all with my marks, but actually it was because of my negligence, and obviously because I didn't focus on my studies that I had to focus. But uh, I learned many things from that. I learned my lessons from that, and I believe that that won't repeat. Okay. When you have realized this thing that you have made a mistake or you have not negligence, when you have missed Uh, after 12th result? no, actually not after 12. I realized it in my second year of graduation when I got proper mentors was who was quite who was able to answer my questions about why knowledge is so important. So right now I know that why knowledge is so important. Hmm. Issues. So NMIMS, that's of Mumbai, Yeah, Asimunji, yeah, and SHMRD Symbiosis. Okay. Okay. You have wrote in your CV that becoming your goal is becoming founder of my own startup and developing it to a global corporation, right? What's the vision? How you will, let's suppose that you have made your own startup, what do you call? How you will make that global corporation? okay. That part I would say that uh, I believe that technology is the future of the world, and because of that I'm already learning few aspects of technology, that is coding and whatever I can learn for that. And I believe that I can produce a product at that time when I will have a sufficient knowledge that will be very important for world, as well as for me, that uh, that I can that can make an impact on the world. So I would say that I would focus on the production of that product, and how we can market that. Will I need sufficient knowledge for that? But right now, I would say that this is what I have in my vision right now. So my question is that how much time, according to you, will take your startup to from zero to make global corporation? How many years you will take? 5, 6, 10, 1, 2? How many years? According to you, rough idea any? Um, s- uh, Honestly, I would say that I can't say that part, that how much time it can take to be a global corporation, because I can say in reference to a few companies. Some companies took 10 years to be a global corporation. Some took hundreds of years. But uh, whatever it takes, I'm willing to give that to it. Okay. Do you take any leadership role in your life? Uh, Sorry, sir, I didn't get you. Have you take any leadership role in your life? Yes, sir. I'm a fresher, so I don't have any work-related leadership role. But in terms of uh, in my graduation, I did uh, captain a football team during my second year. Hmm. So Okay. that part I know. Okay. So you belongs to scheduled caste category, right? Yes, sir. Okay. So let's talk about reservation. What do you think, the Okay. reservation is a good or not? Because I think Um, you are financially unstable. And most of us, people are financially stable in a scheduled caste category. So why do you think that you have taken reservation? okay. What I see it as that I got an advantage and I need to use it, because I believe that if I have an advantage, so I should use it. But if I see it from different people's, means from general categories view, that it obviously is not a right thing, because there are so many people with much. I believe that
there can be so many people with much more potential who could have deserved this place, but as I got the advantage of my category, so I seriously need to use it. Okay, I don't have any personal with that, but I have to ask the question. So, what's your weakness? Or I would say that I have a weakness of taking emotional decisions. A few time I took it during my graduation, but I think that I am getting a lot better in it right now, and Yeah, soon go it ahead. will be totally all right. Okay, you have weakness of emotional decision, right? So Okay, so what you're coping with that? What's the steps you are taking to cope with that? okay, first thing is that I always try to take everything as a business decision. So there obviously in business emotional decisions can be a very brutal thing, so whatever I see even in news I try to see it as a business person, so that I don't get too much of emotional on that. So for now I'm doing that part, and I think that that is working very fine with me right now. Okay, you're from West Bengal, right? Yes, sir. Recently, a very big day celebrated in West Bengal. There is a lot of Yes. controversy. So, can you name that Divas or day and when that celebrated? um Yeah, I hope you are talking about Parakram Divas Yes, that I'm was talking. celebrated on 23 January Yeah. 2021. Actually, the controversy was Mr. Narendra Modi, PM Narendra Modi visited our state, and during his speech, during when he gave a speech, and then when it came when the turn of Miss Mamata Banerjee came, when she went up to the stage, so few people started shouting out Jai Shri Ram. That's why she didn't spoke about anything that time, and she went off the stage. And that day, I believe that Mamata Banerjee also uh, proposed the idea of four capitals For of India. what do you think that it is right that she's a public figure? So most of the people disturbing are there. So do you think that what she did is the right thing? Because she has to speak. Um, She's a public figure. So she has to speak. What do you think? What she I believe that both uh, what she did at some points and what she should have done also had some points. So I think that she should have, as you said, that she's a public figure. I believe that she should have spoken, but that's also maybe an emotional aspect. I can't comment on anyone's emotional aspect, so I better not say anything about it. okay, fine, no issues. So do you want to ask any question from me regarding Yes, sir. MBA? Yes, sir. I would like to know if you can enlighten me on how to make the most out of it. Means my 2 years MBA course. How can a student get the most exposure and most experience and most out of it throughout the 2 years? Basically, what you have to do is that you have to involve in most activities, whether you are good, you are interested or not, but you have to involve. What you will get from that is that you will get to know how that thing happens, and this will inculcate in your behavior. Let's for example, you got opportunity to sell anything. You have some activity, so you involve in that, whether you know or not, but you have to involve because it is good for your startup. If you have any you will take marketing as a MBA. So if any finance activity is going on, so you must involve in that. This will enhance your behavior, because one day you will be the CEO of some company. You have to see everything, whether finance sector is going good, marketing, operations. So involve in
every category, every activity. Try to involve in every activity and be some what we call soft, voice. Will increase your everything, because marketing is all about softness of your tongue, nothing else. थैंक यू। चलिए, अच्छा रहा आपका। देखिए, आप कुछ जगहों पे, जैसे एक जगह जहाँ पे आप वो संगू बॉर्डर वाला, ये आपको नहीं पता, सीधा बोल सर मुझे आगे मतलब पढ़ना है इसके बारे में, आपने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। दिस शोज दैट योर कॉन्फिडेंस इज लो। ठीक है, वहां पे बाकी जगह कॉन्फिडेंस सही रहा, वहां पे आप इधर उधर नहीं देखेंगे, आपको सिर्फ ये सब मुझे नहीं पता तो खत्म हो गई बात ना। मेरे दिमाग में कौन सा बॉर्डर था? संगू बॉर्डर। संगू, ये मतलब बॉर्डर कौन कौन से स्टेट का है? ये एक्चुअली पंजाब और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में एंटर करता है। हरियाणा से जब एंट्री करेंगे तो संगू बॉर्डर में ही आएंगे, गुरुग्राम साइड। ये जो अभी यहाँ जहाँ वायलेंस हुआ, गाजीपुर वायलेंस हुआ, आईटीओ में रेड फोर्ट के पास। ठीक है, दूसरी चीज आपने वो अच्छा बोला कि ममता बनर्जी को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। देखिए, वो एक पॉलिटिकल कमेंट है, ठीक है, उसमें आप साइड से निकल जाए बेहतर होता कि सर कि हाँ शी हैज टू स्पीक, और उसमें जय श्री राम बोला, बट जबकि वो पब्लिक फिगर में बोलना चाहिए था। ठीक है, बट ये आपको मतलब नहीं है। मान लीजिए वो जो सामने इंटरव्यूअर है वो राइटिस्ट नहीं, लेफ्टिस्ट है, उसके लिए तो भैया नहीं बोलना चाहिए था। बहुत सी चीजें हो सकती है ना, आपको इंटरव्यूज को समझना होगा, उसके हिसाब से जवाब देना होगा कि वो क्या सोच रहा है। हर व्यक्ति न्यूट्रल नहीं होता है। रिजर्वेशन पे आपने अच्छा बोला, ठीक है, बट वहां पे थोड़ा मुझे रूड दिखे। मतलब वहां पे एडवांटेज आपको है, बिल्कुल है, लेकिन आप मतलब ऐसा ना करिए कि नहीं मेरे को है तो मैं करूंगा, ठीक है ना। सर मैं वो उधर क्या आपको बोलूं फिर आपसे उसका आंसर? वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो आप सीधा बोल देते यस सर आई हैव एडवांटेज, मतलब आई हैव एससी कैटेगरी, और आप ये मतलब जनरल में भी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, बोल सकते हैं हाँ एससी को तो है, हाँ सर है, बट वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, मेनी पीपल आर इन दिस, ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि अभी भी बहुत से लोग इन रिजर्वेशन की जरूरत है। और आप जनरल में भी सर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे ईडब्ल्यूएस है वो सर आ गया है, ठीक है। सो रिजर्वेशन इज ऑल अबाउट। तो और हाँ, एक जगह पे आप मैं भूल गया, आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, कहीं पे आप बहुत ज्यादा मतलब हो गया था, मैं रिकॉर्डिंग में बता देखूंगा तो पता चलेगा, मैं भूल गया। मतलब बहुत ज्यादा बोल गया था। हाँ आप बोल, और हाँ एक और चीज है कि आप पता है आंखें इधर उधर करते रहते हैं, नोटिस किया है? कभी आप इधर देखेंगे, कभी स्क्रीन में, आप स्क्रीन में सिर्फ कैमरे को देखिए ना, अब बोलते जाइए। ओके सर, वो ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जाता था कभी कभी और थोड़ा सा तो वो मतलब होता है सर, कभी कभी कोई हार्ट इशू में नहीं। प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ ये मैं कह रहा, हाँ ये मैं याद आ गया, आपकी सीवी में लिखा है कि पार्टिसिपेटेड इन 30 आवर्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कोर्स, यहाँ पे आप हाँ, समझा नहीं पाए। अच्छा ये वाला सर। हाँ वो थोड़ा सा, वो एक्चुअली सर मैं वो सीन हो गया ना कि उसको मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक छोटे में कैसे समझा वो मेरे को समझ नहीं आया, हाँ तो इस पे आप इसलिए करिए, ठीक है। ये आपकी वो सीवी चीज में मेरे को जो थोड़ा जो सा वर्ड लिखा प्रैक्टिस है, करना होगा। हाँ जो वर्ड देखिए, ये चीज तो मुझे पता नहीं क्या होती है, जो वर्ड लिखा है आप उस एक एक वर्ड को आप समझाने की कोशिश करिए। जैसे फिलोमैथ मुझे नहीं पता था, आपने बाद में बताया कि क्विक लर्नर होता है, ठीक है। दूसरी चीज, आपने बोला कि आप फुटबॉल खेलते हैं, आप ये लिखा ही नहीं, आपने लिखा डिसिप्लिन्ड एज वेल एज अ टीम प्लेयर, तो सर वो आपने, नीचे उसमें लिखा है ना वो अचीवमेंट्स में लिखा हुआ है आई थिंक, तो मैंने तो स्ट्रेंथ पूछा था ना, खो के अंदर। अचीवमेंट्स मैंने पूछी नहीं आपसे, ठीक है। अच्छा मैंने सर जब वो आपसे, हाँ। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कैन यू लिस्ट एनी 5 स्ट्रेंथ, क्यों? क्योंकि आपकी सीवी में 5 स्ट्रेंथ लिखी थी, मेरे सामने आपकी पूरी सीवी लिखी खुली थी, इसीलिए, ठीक है। और एक चीज है, अरे ये अच्छा, और अपने गोल पे आप थोड़ा सा वर्क करिए, उस पर बोलिए कि आप मतलब, ये नहीं कह रहा हूँ, क्या आप और अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। उस गोल के बारे में सोचिए कि और क्या मैं बोल सकता हूँ। जब आपसे कोई गोल पूछे तुरंत आप उसको बताइए कि सर मेरा गोल ये है, विजन ये है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस बहुत बन सकता है। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है जो इंटरव्यू ले रहा है, इसको बंद करो, जो इंटरव्यू ले रहा है वो अगर उस फील्ड का हुआ और आपको नॉलेज नहीं है तो आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछेगा, सारे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछेगा, ठीक है। तो उसमें आप क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। नॉलेज उसको नहीं, फिर तो फाइन, वो तो सुनता ही रहेगा। जैसे
मोस्टली जगहों पे आप बोल रहे थे, तो मैं आपकी सीवी पढ़ रहा था कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है। ठीक है, ऐसी चीजें हैं। और सीवी आपके से अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें जितना आप ऐड कर सकते हैं उतना ही आपको जवाब देना होगा, ये बात याद रखिएगा। तो अब मैंने और कुछ आपसे ऐड पूछा था करना हु इज द अभी? फाउंडर ऑफ ओयो, तो जब मैंने ऐसा क्यों पूछा? सर वो तो उसमें लिखा हुआ है इसमें इसीलिए। लिखा है कि मैंने हु इज द फाउंडर ऑफ ओयो, ठीक है। और ये आपने हु इज द फाउंडर ऑफ स्टारबक्स, सीधा बोलने का ये फाउंडर है। आपने 3 फाउंडर हैं, 2 के आपको नाम नहीं पता, फिर क्या है आपने हाँ कहा? सर। सर अगर वो जो वहां पर बैठा हुआ उसको अगर पता हो तो, कि 3 फाइन, फाउंडर है वो। तो हमको नहीं पता ना। अब हमको ये पता है कि 3 फाउंडर है, लेकिन हमको ये, अब जैसे एप्पल में 3-4 फाउंडर है, बट अपने को तो एक ही नाम पता है, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स, अपने को तो खाली एक ही पता है, अपने को क्या पता 2 से मतलब है, ठीक है ना। तो ठीक है इसलिए सर। आपको जितना पता आप उतना ही बोलिए। बोल, मैंने कहा सर 3 फाउंडर हैं, 2 के नाम बताओ। और क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना, तो फिर सामने वाला बहुत ऊंचे उस पर जा सकता है, आपके हर क्वेश्चन पे जवाब होगा। ठीक है, कोविड के बारे में आपने कहा, मैंने आपसे वो पूछ लिया वैक्सीन के बारे में, ठीक है। अभी मैं आपसे इंटरनेशनल वैक्सीन पूछ लेता तो बताइए। फाइजर सर। फाइजर या एस्ट्राजेनेका की, ठीक है। फिर वो अभी मॉडर्ना भी है, बहुत हाँ, सारा है। बहुत सारी हैं वैसे, बट जो हमारे देश में है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और थोड़ा सा देश के बाद एस्ट्राजेनेका और ये फाइजर जरूर आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, वेस्ट बंगाल से आप हैं, इलेक्शन आ रहे हैं वहां पे 2021 में है, ठीक है। बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी, अभी मैं आपसे गवर्नर का नाम पूछूंगा, बताइए वेस्ट बंगाल के। मैं फिर भूल गया उसका नाम। ठीक है, तो ये चीज आप वो देख, नाम ही अच्छे से याद नहीं रहता। हाँ, अरे मैं बार बार पढ़ता हूँ, अभी अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, फिर मैं भूल गया। कुछ देखिए, लिखा तो आपके था उसमें। ऑनलाइन है ना, मैं बताऊं आपको क्या करिए, आपके ऑनलाइन है ना, आप अपने इधर, मतलब जो आप लैपटॉप में देख रहे हैं ना, हाँ लैपटॉप सर। में है कि फोन में है? लैपटॉप है सर। लैपटॉप है, लैपटॉप के सामने ना आप अपनी चीजें लिख लीजिए, मैं तो ये करता था। ऐसे कोई ऑनलाइन कुछ होता है तो आपको कौन देखने थोड़ी ना आ रहा है, आप लिख लीजिए सामने, जहां कुछ हो सट से पूछे जवाब दे दीजिए। जैसे मैंने ऐसे देखा, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे मतलब ये है ना, ये स्क्रीन के बगल में लगा दीजिए, उसमें कर लिया, और याद नहीं हो रहा है तो ये चीज मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ आपकी, जो आप अपनी काम करिए, जो सीवी है ना, उसको ना एक निकला के यहाँ पे लगा दीजिए, बिल्कुल दीवार से जो है ना आपकी वॉल है, उस पर बिल्कुल चिपका दीजिए, बिल्कुल ये अपना स्क्रीन, ठीक है ना। इधर आप अपनी सीवी लिख दीजिए, इधर जो आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो भी है वो सब लिख दीजिए, जहां कुछ पूछे वहां सेट से उसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। ठीक है मतलब सर। सीवी कम से कम 8-10 बार पढ़ के जाइएगा, ऑनलाइन में फायदा, ऑनलाइन यही होता ही है, ये सब ये करते हैं। आप ऐसे करके जाइए, आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। जी सर। बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप करिए, इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आप मतलब इसमें ना आपको लैग नहीं करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, आपको पता नहीं है कैसे है क्या है, तो आप उसमें लैग नहीं करेंगे, तुरंत देखा तुरंत जवाब दे दिया, ऐसे ठीक आप है कर सर। सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? जी सर। न्यूज़पेपर हिंदू। पढ़ते रहिए, एडिटोरियल पढ़ते रहिए, और सब चीजें करते रहिए, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। और कोशिश करिए कि मतलब ऐसी जगह बैठिए जहां पे आपकी रोशनी आपके चेहरे पे पड़ रही है, उससे क्या है ना कि आपकी मतलब, और ग्लव वो लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, हाँ सर, स्पेक्स है बट बहुत कम पावर का है। इशू नहीं, पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेक्स लगाएंगे ना, तो आप अगर अपनी आंखें उधर भी करेंगे ना, जैसे मेरा स्पेक्स कहाँ गया, ये रहा, जैसे मैंने स्पेक्स लगा लिया, तो आपको मेरी आंखें दिख नहीं रही है, ठीक है। अब मैंने इधर देखा, इधर देखा, आपको पता थोड़ी है। तो आप इंटरव्यूअर, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे देखा, इंटर समझ जाए कुछ लगा रखा है, दिमाग लगाया इसने, आपने ऐसे स्पेक्स लगा लिया, तो आपने अगर आंखें घुमा भी दी अपनी, कुछ चीज को पता तो चल नहीं रहा है, सर बट वो आप जो उसमें लगाए ना, तो उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर वो उसमें दिख जाएगा ना कि लगा के रखा है कुछ। तो अगर देखिए, आप ऐसा मतलब बनाइए, बस देखिए अब मेरे सामने से यहाँ पे लाइट है, ठीक है, तो मुझे पता नहीं, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, वैसे आंखें मेरी दिख रहा नहीं है दिख सर, रही है, मेरा बिल्कुल दिख स्क्रीन दिख रहा है। रही है। अब मैंने आंखें हल्का से इधर करी, आपको दिखेगा नहीं। स्पेक्स लगाएंगे ना, तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी आंखों का मूवमेंट नहीं पता चलेगा,
अच्छा सर, ट्राई करके देखते हैं वो भी next ये time। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन में ट्राई करिएगा। ये आप लिखिए, अगर आप नेकेड आइज में बैठेंगे ना तो आपको तुरंत दिख जाएगा। अगर आप ऐसे देख रहे हो, मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल स्पेक्स लगा लीजिए, उसके बाद आप करिए, थोड़ा आप अच्छे दिखेंगे। ठीक है मतलब सर। हाँ ठीक है, मैं समझ में आऊँ। ये चीज कर सकते हैं, जैसे सीएम के नाम है, प्रोटेस्ट कहाँ फार्मर्स हो रहा है, ये सब चीजें हैं। ये है, अगर आपको नहीं भी आता है आप सीधा मना करिए, मुझे नहीं आता है। अपने जो आपकी विजन है, आइडियाज है, ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इस पे काम करिए, जरूर आपका होगा। कि वो क्वेश्चन, और आप फोकस कोशिश करिए। जैसे आपने बात की, मेरे फादर आर्मी में, आपने वो 3-4 बार रिपीट किया, मुझे फिर आपसे पूछना ही पड़ा कि ऐसा ऐसे है। तो क्रॉस क्वेश्चन आप जो बोलोगे उसी से ही आएगा, बात आप याद रखिएगा। तो कोई मतलब नहीं कि आपके फादर आर्मी में है, जेसीयू है, कर्नल है, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैंने उससे क्वेश्चन क्या पूछा। ठीक है, तो जो भी आप बोले उसका क्रॉस क्वेश्चन खुद ही बना के रखें। मेरे से ये क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसके बदले मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको फिर उसी, क्योंकि नई चीज आपसे पूछेगा नहीं कोई। ठीक है, ये ऐसी चीजें। एट में कितने 85 कितने परसेंट आए? 82 ऐसा कुछ है ऐसा कुछ बहुत आप याद होना चाहिए कि भाई 82% सर। हो वो गया। मतलब पॉइंट में है ना, 81 पॉइंट हाँ, समथिंग है। 81 पॉइंट समथिंग, जितना भी आप सीधा बोलिएगा, ठीक है, 81 पॉइंट समथिंग ये है। ठीक है, रिजर्वेशन पे आप तैयार रहिएगा, रिजर्वेशन पे आपसे शायद क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, ये रिजर्वेशन के बच्चे मोस्टली जो होते हैं वो कैट नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि जो मोस्टली आप वेस्ट बंगाल से, आप यूपी में होते तो बिल्कुल ही कैट ना देते, मैं सही बता रहा हूँ। यूपी में तो ये माहौल है कि जो रिजर्वेशन होता है जिसके पास, वो फिर गवर्नमेंट जॉब ही ढूंढता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी पूछा आपसे कि ये मेरी नॉर्दर्न थोड़ी ना सोच, वैसे माइंडसेट वैसा ही होता है। ठीक है, और बंगाल में तो ऐसा ना हो। नहीं सर, बंगाल में भी ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही है। तो बंगाल में हर कोई गवर्नमेंट जॉब ही खोजता है। अच्छा, और और क्या पूछ सकता है, पराक्रम दिवस, इस पर अब तैयार करके जाइएगा। ठीक है, और 26 जनवरी की में जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर शायद ना पूछे आपसे। वो हो सकता है अगर नॉर्थ का होगा, इधर दिल्ली का होगा या इधर इंटरव्यू होगा तो पक्का पूछेगा। जहां का वो होगा ना, वहां के बारे में वो जरूर पूछेगा। ठीक है, और बस यही सब कहना था। ठीक है, और हाँ, सर वो जब आप नहीं आता है आप उस सीधा मना कर दीजिएगा उसको कॉन्फिडेंटली। वैसे मुझे पिछली बार में और आपने आज में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी लगी। पिछली बार आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ऐसा क्यों? सर सोच रहे थे क्या? थोड़ा सा प्रिपरेशन भी ज्यादा था, मतलब वो इंट्रोडक्शन भी स्टार्टिंग में पूरा बहुत टाइम से प्रिपेयर कर करके बनाया वो। हाँ, आप स्ट्रेंथ थोड़ा अपनी डाल दीजिए। ठीक है, जो कुछ भी बोलिएगा आप ये बात याद रखिएगा, जो कुछ भी बोलेंगे आपको वो पक्का पूछेगा, रिटर्न मारेगा उसका। मतलब ये होता ही है, सीवी जैसे मेरे सामने खुली है, वो सीवी उसके सामने भी खुली रहेगी। ठीक है, और वो सीवी से ही पूछे, जितना सीवी आप डालेंगे उतना ही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो जितना कम सीवी में रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे, तो सीवी रखेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कभी सर भी वो अपने जो आप भी को लिखा होगा निगेटिव उसमें नहीं हो होना है जाएगा। ना। कैसे? नंबर वैसे अगर आपके कम है तो ये आपके नंबर है, इसमें आप भी क्यों कह रहे हैं मेरे नंबर कम है। मैं कह सकता हूँ कि आपके नंबर कम है, आप पूछ रहा हूँ। देखिए, इंटरव्यूअर क्या होता है, वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी तरह अपनी गलती बताओ। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, जो भी आपके पास है। देखिए, हमारा पॉजिटिव माइंड क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक। हमारा ठीक है, आज हमारे साथ बुरा वक्त चल रहा है लेकिन कल अच्छा आएगा, इसे ऑप्टिमिज्म कहते हैं। एक होता है पेसिमिज्म, कि जीवन में हमें गलत मतलब खराब ही रहेंगे। गलती, हाँ। तो ये चीज मत करिए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको कम नंबर कब रियलाइज, जब आपने कहा था मैंने रियलाइज हुआ, मैंने कहा कब रियलाइज हुआ। अगर आप मुझसे ये कह देते कि सर मुझे 12th के बाद ही रियलाइज हो गया मेरे कब नंबर है, फिर मैं आपसे पूछा था कि ये बताइए कि ग्रेजुएशन में फिर आपके 6.6 कैसे रह गए। हाँ, इसीलिए मैं नहीं बोला उस समय। ये मैं सोच के मैंने कहा अरे क्वेश्चन मेरा बर्बाद हो गया। ये दिमाग में ये नेक्स्ट क्वेश्चन था ही मेरा, फिर आप फंस जाते। इसलिए सर वो मेरा जो मतलब सेमेस्टर वाइज है ना, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर मेरा खराब गया है, तो उसकी वजह से मेरा मार्क्स थोड़ा कम आया है। इसीलिए मैंने बोला सेकंड सेमेस्टर से, ये सेकंड ईयर से। अब सेकंड ईयर अगर आप बोलते तो फिर मैं उसमें फोर्थ ईयर डाल देता, ये फोर्थ सेमेस्टर डाल देता। नहीं नहीं, वो तो देखिए वहां पे कंडीशंस दूसरी होंगी। जब आप आंसर्स दे रहे होते हो तो आपके दिमाग में अपने आप ही चल रहा होता है। ठीक है, वो चीज फिर नहीं होता है।
और आप वेस्ट बंगाल कुछ तो पूछेगा नहीं, हो सकता है वेस्ट बंगाल में एक्चुअली हो सकता है आपके बारे में ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, ठीक है। अभी जो चाइना वॉर चल रहा है हमारा, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बंगाल सिक्किम में आप रहे हो, अभी कहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ है जस्ट अभी 20 जनवरी को, पता है आपको? कुछ नुलांग थोड़ा लेक या सेक्टर कुछ एक है, वो भी सर में पढ़ा था, बट वो थोड़ा सा हो गया। नुलांग लेक या कुछ एक है। अरुणाचल प्रदेश में आपने अरुणाचल प्रदेश में कुछ किया है ना? हाँ, आपने वहां से 12th किया है, HSC किया है, अरुणाचल प्रदेश से किया है ना आपने? नहीं सर, आंध्र प्रदेश से किया है। आपने यहाँ पे AP क्यों लिखा? मेरे को तो अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, आप वहां पे बोलेंगे आंध्र प्रदेश। हाँ सर। नहीं, ये देखिए अपना अपना होता है, ठीक है। जैसे जो इंटरव्यू, देखिए जो क्वेश्चंस मैं पूछने जरूरी वो क्वेश्चन वो भी पूछे, बस आपका विश्वास बढ़ेगा इससे, ठीक है, नो नथिंग एल्स। वो क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट पूछे और वो सबसे अलग अलग क्वेश्चन, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि आप जवाब क्या दें, उनको ये मतलब होता है कि उनके क्रॉस क्वेश्चंस का आप मतलब लैग नहीं करें। मैंने ऐसा, क्योंकि बहुत लोग रट के आ जाते हैं ना, क्रॉस क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाएंगे, ये चीज मत करिएगा। जो भी है वो सीधा सच बोलिएगा, नंबर आपको जरूर अच्छे आएंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी है आप सही, क्योंकि उसके जब आप सच बोलेंगे आपके एक तो विश्वास होगा, दूसरी चीज आप क्रॉस क्वेश्चंस में आप आंसर दे लोगे। जैसे देने वाला जो था उस पर आप तैयार करके जाइएगा, जितने भी आपने चीजें करी हैं उसके बारे में आप तैयार करके जाइएगा, क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है ना, ये चीज आप जरूर करिएगा। और स्ट्रेंथ हो गया, करिकुलम एक्टिविटीज में आपका एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर दिखते हैं, ये चीज अच्छी बात है। एक्सपोजर्स में आपने मैनकाइंड फार्मा, वेलकम हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन सिक्किम, इसको मतलब सिक्किम भी गए? जी सर, लास्ट तो ईयर ही गया। हाँ, तो ये चीज आप तैयार रखिएगा कि आपने वहां सीखा क्या। तो आपने कहा ना कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, क्या बोल रहा हूँ, फैलाथॉमी जो भी है, फैलाथॉमी, ठीक है, मैंने नया वर्ड सीखा, तो जिसका मतलब है कि आप बहुत क्यूरियस है। आप क्यूरियस, ऐसा नहीं है कि हम याद करके भूल जाएं। जी सर। ये तो आपने क्या सीखा, आप ये जरूर मतलब करिएगा, ठीक है, ये चीज आप बना लीजिए। मान के चलिएगा आपसे 80% क्वेश्चन आपकी CV से ही होगा। बताइए अगला इंटरव्यू कब लेना है आपका? मैं आप बिल्कुल तैयार अभी तो बढ़िया फ्री हूँ से। सर। हाँ? सर आज 28 है, नेक्स्ट महीने का 2 या 3, जैसा आप बोले। 2 या 3, ठीक है, कोई इशू नहीं, जब भी आप बताइए, आप डेट डिसाइड कर लीजिए। 5 को लेते हैं, ठीक है, 5th ऑफ 20th को है ना आपको, 5 को लेते हैं, देन 10 को लेते हैं, 15 को लेते हैं, फिर 18, 19, 20 को लेते हैं, 7, 4, 5 और लगते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, काफी लंबी रिकॉर्डिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात होगी 5 तारीख को, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, ठीक है प्लीज। जी सर। ओके, और तैयार रखिए वो चीजें, मतलब जो है नेक्स्ट टाइम अपनी आप जो CV है हर चीज आप तैयार रखिएगा, अपने स्क्रीन पे के सामने बगल बगल वो चीजें लिख लीजिएगा, ठीक है, जो चीजें हैं, और स्पेक्ट्स लगा के बैठिएगा, ठीक है, और शेव करा के बैठिएगा, बाल कटा के बैठिएगा। ओके सर।